बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम बीएस मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स कोर्स का थर्ड सेमेस्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोडक्शन आता है वो हमारे पास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके सर, आप करें। जी, आपको मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम आज अपना पहला चैप्टर शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पहला सेमेस्टर बीएस थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स कोर्स जो है हमारा 201, उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें जो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। वो है, सबसे पहली चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन और यूनिवर्स, यानी पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? A statistical population or universe is defined as the aggregate or totality of all the individual members or objects of some characteristics of interest. कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे मुताल्लिका तमाम लोग या इंडिविजुअल मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज की पॉपुलेशन हो, उन सब लोगों का या ऑब्जेक्ट्स का मजमूआ जो है वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। मसलन सर सैयद कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं तो सर सैयद कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स हमारी एक पॉपुलेशन होंगे। यही हमारा उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो भी होगा वो सर सैयद कॉलेज का स्टूडेंट होना उनका इस बात का दलील है कि वो हमारे पॉपुलेशन में शामिल है। अब पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। पॉपुलेशन के उनको सैम्पलिंग यूनिट्स कहा जाता है। पॉपुलेशन आपको हो गया, समझ में आ गई। और उसके बाद अब हम चलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफिनिट पॉपुलेशन के ऊपर। इसमें देखिए, फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? A population is said to be finite if it consists of a finite or fixed number of elements or objects. Very simple. Finite number means those which we can count, and infinite those which we cannot count. Very simple. If a population have a countable number of values or items or objects, it is called a finite population, and a population is said to be infinite population if it consists of infinite number of elements or objects. Some examples of finite population are all college students in Islamabad, students of Qadir University, and all the employees in the Pakistan Secretariat are the examples of finite population. Now, the infinite populations examples, stars in the sky, because we don't know how many are there.
all the points on a line. We don't know the points, number of points on a straight line. All the heights between 2 meters and 3 meters. We cannot assume that how many values can be there. So these are the examples of infinite population. Now, we discuss the existing population and hypothetical population. What is existent population? Existent population means a population of concrete or physical units such as the students, households, school drinks produced by a production line, etc. are called the existent populations. After that, existent means the items or population whose elements physically exist. Now, you can ask, what are the things which physically do not exist? Yes, these are some experiments whose results cannot physically be existed. So that is called a hypothetical population. So existent population means a population of concrete or physical units such as students, households, holdings produced by a production line are called the existent population. Now we move on to the hypothetical population. We have studied that in random experiment in cases of probability, the set of all possible outcomes of a random experiment, what it was, sample space. Yes. Suppose we roll a die. There are 6 possibilities to come, but only one comes up. So there are 6 possible outcomes, which what and only one of them will occur. So the set of all possible outcomes of an experiment is called a hypothetical population. It means that the hypothetical population is consists all possible outcomes of a random experiment, but it do not physically exist. Or we can say that all conceivable ways in which an experiment can result constitutes the hypothetical population. For example, the results of uppermost faces when 2 dice are rolled. तो existing population कौन सी हुई जिसके फिजिकल आइटम्स जो हैं आइटम जो हैं वो फिजिकली आइटम्स लोग ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो होती है जिसके physically exist nahi karte, but those are all possible outcomes of an experiment. So next, now we move on to the target population and we move on to the sampled population. What is the difference between these two? Target population about which a population about which we have to draw inferences is called the target population. Now what you say that, so what is the target population? Let me explain with an example. First of all, suppose we are asked to find out the proportion of motorcycles in the district Rawalpindi. First of all, district Rawalpindi, all the registered vehicles in district Rawalpindi are our population. You got my point. Now, what is sampled population? A population from each sample is drawn is called sample population. How they can be different from each other? Suppose a motorcycle has been accidented and it's spoiled and sold out. It's trash now. It is not a vehicle now. Suppose a car burned. Now it is burned. It's not on the road. So it is not included in the sampled population. But it is included in the target population because it's a part of target population. So now you have the difference between the target population and the sample population. Target population means about
A population about which we have to draw inferences is called a target population, and sampled population is a population from which we have to draw samples. Now, we move further ahead. What is sample? Sample is a small representative part of the population, or sample is a part of the population selected with the object that it will represent the characteristics of the population. Now, why can we say that it's a small? Number one, why should it is small? It is small because we have to reduce our labor work to working time we have to save. स्मॉल होना चाहिए. नंबर टू, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए. ये नहीं है कि अगर हम पिंडी की रजिस्टर्ड गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड गाड़ियों में से सैंपल उठा लेंगे. नहीं, हमें पिंडी ही की रजिस्टर्ड गाड़ियों में से सैंपल उठाना होगा. सो the sample is defined as the small representative part of the population. A small part or some items from the population selected which truly represent the population are called samples. Now, sampling. What we mean by the sampling? Sampling means the process of selecting sample from the population is called sampling. How we select a sample from the population? That process is called sampling. Very simple, not to worry that much. In last, for today, there are two basic purposes of sampling. Now we are discussing the purpose of sampling. To provide the sufficient information about the characteristics of the population without examining every unit of the population. It means that we have to analyze our characteristics of the population. We have to provide the sufficient information about the characteristics or parameters of the population, but without examining every unit of the population. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स को स्टडी किए बगैर, एनालाइज किए बगैर हम पॉपुलेशन के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में जान सकें. पहला मकसद सैंपलिंग का. दूसरा मकसद क्या है? हम to find the reliability of the estimates derived from the sample. हम दूसरा मकसद होता है कि जो हम एस्टिमेट्स सैंपल से ड्रॉ करते हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. सैम्पलिंग का दूसरा मकसद, यानी हमने जो सैंपल से एस्टिमेट्स निकाले किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के, हाउ मेनी रिलायबल दे आर, एंड हम वो रिलायबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं. वी फाइंड द रिलायबिलिटी by using the standard error of a statistic and its exact sampling distribution if possible. हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं उस स्टैटिस्टिक की, और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, और उसका स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसका स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हम उसका स्टैंडर्ड एरर को, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, उसके जरिए से हम उसकी रिलायबिलिटी मेजर करते हैं. I think that's enough for today. Thank you.